Anna Sahani back with the new video for Nationalism in India class 10th. We are doing topic 4 in this video और जिसने topic 1, 2 and 3 के important questions नहीं देखे उसका link नीचे description box में है. Please go and see that and do these questions thoroughly because I am sure इससे बाहर कोई भी question नहीं आने वाला. So let's start with the topic 4. Alright, बहुत छोटा सा है topic 4. So let's quickly start without wasting any time and let's quickly finish this. Alright, so basically the topic 4 is about the sense of collective belongingness. What is collective belongingness? लोगों के बीच में ये collective belongingness वाली feeling कैसे आई? ये unity कैसे आई? How they felt that we are Indians and not Hindu, Muslim, Sikh? राइट, लेट्स सी दैट. बेसिकली उनके बीच में इंडियंस वाली फीलिंग आई. ये नहीं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, नहीं, हम इंडियंस है बिकॉज वी लिव इन इंडिया. लेट्स सी ये कैसे हुआ. ऑलराइट, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस एंड हाउ इट वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? वो अब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है? कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब है कलेक्टिव आइडेंटिटी. हम सबकी आइडेंटिटी, नो मैटर विच रिलीजन वी बिलोंग टू. इफ वी आर लिविंग इन इंडिया वी आर इंडियंस, राइट? एंड लेट्स सी हाउ इट वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. सो जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है वो ये है कि जो लोग थे इंडिया के, दे बिगेन टू बिलीव दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन. दे डिस्कवर्ड सम यूनिटी इन देम, जिन्होंने उनको एक साथ बांध के रखा. दे कंसिडर्ड देम एज इंडियंस, नॉट एज हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन. ओके, so collective belongingness means the people began to believe that they were the part of the same nation and they discovered some unity which bound them together. And how it was practiced in India, let's see that. Okay, first point is main cultural process. You know, culture, just because of the culture which was followed in India, people began to believe, yes, we are the part of the same nation and we have some unity which will going to bound us together. Okay, तो nationalism वाली feeling तब arise हुई that the India of identity was associated with the image of भारत माता. जब इंडिया को इमेज दे दी गई as भारत माता, तब लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म वाली, सेम नेशन वाली फीलिंग अराइज हुई. जो फर्स्ट इमेज थी भारत माता की, वो बंकिम चट्टोपाध्याय ने बनाई थी एंड ही वाज द वन हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम इन हिज नॉवल अनंत माथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वंदे मातरम सबसे पहले किसने लिखा था और कौन सी नॉवल में लिखा था? फिर जो अबिंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी फेमस पिक्चर जो थी भारत माता की उसको पेंट किया. ऑलराइट, और जो डिवोशन था, जो मदर फिगर दिया गया हमारी कंट्री को, इट वाज द एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म. ऑलराइट, so let's me just read till here, then I'll explain you further. So collective belongingness means that people begin to believe that they are the part of the same nation and discovered some unity which bound them together. Main cultural processes, it was with the growth of nationalism that the identity of India was associated with the image of Bharat Mata. This image was first created by Bankim Chattopadhyay, who had written Vande Mataram in his novel Anand Math. Then Abindranath Tagore, he painted the famous image of Bharat Mata. Devotion to this mother figure came to be seen as the evidence of one's nationalism. Alright, so now let's study about the Indian folklore. Okay, ideas जो nationalism का idea था वो बहुत सारी मूवमेंट में भी आया. ठीक है, it revive to फ्रॉम इंडियन फोकलोर. ओके, जो फोक टेल्स थे वो गाए जाते थे विलेजेस में टू गिव अ ट्रू पिक्चर की ट्रेडिशनल कल्चर क्या है. ठीक है, एंड विच वाज करप्टेड. ठीक है, बेसिकली फोकलोर गाए जाते थे ये दिखाने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इंडियन कल्चर वाज, और ये जो इंडियन कल्चर है वो डैमेज कर दिया गया है आउटसाइड फोर्सेस ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने वो इंडियन कल्चर आके कंप्लीटली डैमेज कर दिया है. बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगिन कलेक्टिंग बैलेज, नर्सरी राइम्स, मिथ्स, ये रिवाइव करने के लिए, हमारा फोकलोर, हमारा कल्चर को रिवाइव करने के लिए लिखना शुरू कर दिया.
ठीक है. In Madras, Natesa Sastri, he published 4-volume collection of Tamil folklores of southern India. All right. So let me just read this for you. Indian folklore. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive the Indian folklore. Folktales were sung up in the village to give a true picture of the traditional culture of India, which was corrupted and damaged by the outside forces. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths to revive the folklore. In Madras, Natesa Sastri published a 4-volume collection of Tamil folklore and folklore of southern India. Alright, I hope this much is clear to you. Now we are doing third part, that is icons and symbol. तो जो स्वदेशी मूवमेंट हुई थी बंगाल में, उसमें एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया था रेड, ग्रीन और येलो का. ठीक है. उसमें 8 लोटसेस थे. 8 लोटसेस का मतलब था 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. एक क्रेसेंट मून था, हाफ मून. ठीक है. वो रिप्रेजेंट करता था हिंदू एंड मुस्लिम. ठीक है. 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया. जो ट्राई कलर फ्लैग था, इट वाज अगेन डिजाइन्ड in red, green and white color and it had a spinning wheel in the center. और spinning wheel क्या कहलाता था? Ideal for self help. All right, आत्मनिर्भर. Okay, icon and symbol. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor red, green and yellow flag was designed. It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. By 1921, Mahatma Gandhi designed the Swaraj flag. This tricolor flag was again designed in red, green and white color and had a spinning wheel in the center representing the ideal of self-help. Alright, and the last part of this question is reinterpretation of history. अब reinterpretation of history में क्या था? जो Britishers थे, they saw India as backward, they saw Indians as primitive and they saw Indian as incapable of governing themselves. According to the Britishers, हम primitive थे और हम incapable थे अपने आप को govern करने के लिए. तो in response, Indians ने क्या किया? इन्होंने past ढूंढना शुरू किया. They began to discover the past और इंडिया की बहुत achievement ढूंढनी शुरू करी. They wrote about all the achievements of ancient India in arts and architecture, science and maths, religions, cultures, law and philosophy. और जो ये glorious time था जो history में follow किया गया, it declined basically the glorious time was followed by a history of decline when India was colonized. Alright, so reinterpretation of history was very important. The British saw India as backward, primitive and incapable of governing themselves. In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievement. They wrote about the glorious development in ancient India in art and architecture, science and maths, religions and cultures, law and philosophy and so on. This glorious time was followed by a history of decline when India was colonized. Alright, so moving towards the next question. Let's see the next question. And next question is very easy. We have already done this in topic 1 and 2. Describe the CDM, that is Civil Disobedience Movement, in topic 3 and National Corporation Movement in topic 2. Alright, so NCM, it was started in January 1921, National Non-Corporation Movement. Civil Disobedience Movement was started on 12th March 1930. ठीक है, जो Non-Corporation Movement थी, it was against the खिलाफत issue. जो Civil Disobedience Movement थी, वो तब start करी जब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की 11 डिमांड्स को रिजेक्ट किया. ठीक है. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज वेरी हाई, बट इफ आई टॉक अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कंपैरेटिवली मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज वेरी लेस. ओके, पीपल आस्क्ड टू नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट मत करो. सिविल डिसोबीडियंस में बोला था ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट भी मत करो और अनजस्ट लॉ, अनफेयर लॉस को फॉलो भी मत करो, ओबे भी मत करो, जस्ट ब्रेक देम. ओके, वुमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, किया था बट बहुत स्मॉल नंबर में. अगर सीडीएम की बात करूं तो वुमेन ने पार्टिसिपेट भी किया था, सॉल्ट भी मैन्युफैक्चर करी थी, फॉरेन क्लोथ्स को भी बर्न किया था एंड दे वर इवन सेंट टू जेल. ओके, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन ऑन 5th February 1922. जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था when 22 पुलिस में they were burnt alive and जो लाठीचार्ज हुआ था, विड्रॉन
जो civil disobedience movement था, it was withdrawn on 5th March 1931 as per the Gandhi-Irwin Pact. Alright, so let me just read this to you. Non-cooperation movement was started in January 1921, while the civil disobedience movement was started on 12th March 1930. Non-cooperation movement was against the Khilafat issue, but while the CDM movement was against the rejection of the 11 demands of Gandhiji by Lord Irwin. Okay, Muslim participation in non-cooperation movement was very high. Comparatively, in civil disobedience movement, Muslim participation was very less. People asked to not to cooperate with the Britishers in non-cooperation movement. While in CDM, people not only refused to cooperate with Britishers but also broke the unfair laws of the colonial rule. Women did not participate in large number in non-cooperation movement. Comparatively, in civil disobedience movement, women participated in protest marches, manufactured salt and burned foreign clothes, and many were sent to jail. So non-cooperation movement was withdrawn on 5th January 1922 due to the violence at Chauri Chaura. Okay, and civil disobedience movement was withdrawn on 5th March 1930 as per the Gandhi-Irwin Pact. Alright, moving towards the last question of this chapter as well as this topic, and that is write a short note on Quit India movement. Okay, Quit India movement को August movement भी बोला जाता है या फिर August क्रांति भी बोला जाता है. It was launched by Indian National Congress which was led by Gandhi ji on 8th August 1942. अब इसमें क्या क्या स्लोगन आए थे? Quit India and भारत छोड़ो for Britishers, do and die for Indians to encourage them कि आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा इंडिपेंडेंस में. बिफोर द मूवमेंट कुड स्टार्ट, जो गांधी जी थे बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट हो पाती, इससे पहले जो गांधी जी की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और गांधी जी और बाकी सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया. स्ट्राइक्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया. पीपल अटैक्ड ब्रिटिश सिंबल्स लाइक पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेस. जो गवर्नमेंट थी बेसिकली उनका इंटेंशन था टू क्रश द मूवमेंट एंड फायर्ड अपॉन द प्रोटेस्टिंग एंड द क्राउड. सेंसर द प्रेस को भी सेंसर कर दिया. जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसमें लोगों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी. अबाउट 10,000 पीपल वर किल्ड एंड 60,000 पीपल वर अरेस्टेड बाय द एंड ऑफ द 1942 एंड गवर्नमेंट वाज सक्सेसफुली एबल टू क्रश द मूवमेंट. Although movement was short-lived, but the people developed a great ability to struggle and sacrifice. So let me just read this for you. Write a short note on Quit India movement. Quit India movement was also known as August movement or August Kranti, officially launched by Gandhi ji, Indian National Congress on 8th August 1942. Various slogans are Quit India movement or Bharat Chodo for Britishers or Do and Die for Indians to encourage them to struggle for independence. Before the movement could start, Gandhi ji declared Indian National Congress illegal. Gandhi Ji's Indian National Congress. It's not Gandhi Ji, it's Gandhi Ji's with apostrophe S. Okay, with apostrophe S. Declared Indian National Congress illegal and arrested Gandhiji and other prominent leaders. Strikes and demonstrations were organized all over India and people attacked British symbols like railway stations, police stations, post offices and so on. The government intended to crush the movement and fired upon the procession and crowd and censored the press. Almost 10,000 people were killed and 60,000 people were arrested by the end of the 1942. In the government, basically the government was successfully able to crush the movement, all right, and movement was short-lived, but people developed the greater ability to struggle and sacrifice. All right, so here let's give an end to the chapter. Chapter is finished and I hope all of the questions are clear to you. अगर कोई doubt है, comment in the comment section box. Follow my Telegram channel, Instagram channel and Facebook channel to get the notes and doubts as well, to get your doubts clear. The link is shared below. और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी टॉपिक 1, 2 and 3 के important questions की, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. In the next video, I am coming up with the map work of this chapter. Bye bye everyone. All the very best for your boards.